नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज है सुपर संडे, लेकर आ चुके हैं हम एक और नया अध्याय आप सभी के समक्ष। तो साथियों, इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं एफएस रीडर के बारे में, फाइल मेन्यू और व्यू मेन्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए मिलकर हाथ मिलाएं, सीखें और सिखाएं। फिर बिना देरी किए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो यूज़ कैसे करना है। ठीक है, पहले आपको कुछ थ्योरिकल पढ़ाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। तो आइए मिलकर हाथ मिलाएं, सीखें और सिखाएं। तो जी हाँ साथियों, Getting started with FSReader, Freedom Scientific FSReader Daisy Player Software, period. एक मिनट। तो आइए आगाज करते हैं। File menu. The file menu contains the following items: open JAWS training table of contents, Control+J, add /. This is a user authorization key that may be required for protected books. Last 5 books open, with number 1 being the most recent, and exit. View menu. The view menu contains the following items: navigation pane, checked by default. Spotlight, checked by default. Spotlight settings. To toggle the check mark of an item in this menu to off or on, open the menu and press enter on that item. The menu is closed and the check mark is turned on or off. The Spotlight Settings menu item opens the Spotlight Settings dialog box. The Spotlight highlights the current unit in the document that you read. The Spotlight color by default is black text on the yellow background. You may use this dialog box to change not only the Spotlight background and text color, but also the entire document's background and text color. The Spotlight Settings dialog box. The Spotlight Settings dialog box. तो साथियों, यहाँ पर हमारा ये जो थ्योरिकल अध्याय था वो समाप्त होता है। अब आपको लेके चलते हैं प्रैक्टिकल अध्याय में। तो देखिए, मैं डेस्कटॉप पर हूँ। Title list, desktop 1. Folder view list view, FSReader. और मेरा फोकस कहाँ है? एफएस रीडर पर है। इंसर्ट की से टाइटल चेक किया, इंसर्ट टैब से फोकस चेक हो गया। अब मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। Enter. FSReader dash untitled. जैसे मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले कौन सा मेन्यू आता है, उसके बाद कौन सा मेन्यू आता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेन्यूज की, फाइल मेन्यू की। ठीक है, मैं ओल्ड प्रेस कर रहा हूँ यहाँ। Menu bar, file to navigate, press left or right arrow, F. फाइल View, V. और व्यू मेन्यू की। ठीक है, फाइल की शॉर्टकट कमांड है Alt F और व्यू की शॉर्टकट कमांड है Alt V। Audio, A. ऑडियो की A, Navigation, N. नेविगेशन की N। Audio, view, V. File, F. तो हम इसको दो तरह से ओपन कर लेंगे। एक तो Alt दबा कर रखा, Alt दबाकर राइट लेफ्ट एरो से फाइल जो चीज चाहिए उस पर एंटर कर दिया, या मैं डाउन एरो कर Menu, file menu, open Control+O to navigate, press up or down arrow, O. यहाँ से आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। Open JAWS training table of contents, Control+J, J. यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट को ओपन कर सकते हैं। Add UAK ... U. 1 introduction, 1. 2 using the keyboard to read and edit text, 2. ठीक है, ये देखिए, ये बुक्स हैं, ये टेबल ऑफ 3 कंटेंट। FSReader getting started, 3. Exit, X. ठीक है, 3 FSReader getting started, 3. जैसे मुझे मान लो मुझे इस बुक को ओपन करना है। Enter, menu bar, leaving menu bar.
FSReader getting started. Page has 19 headings and 2 links. Bookmarks can be very handy for going back to particular spots of a book and refined command blank. The view book blank. The view book blank. Heading level 3 help. Blank. The help menu is blank. List of 2 items. Read textbooks and other content from Learning Ally blank. FSReader can also play audiobooks from Learning Ally. Learning Ally is the nation's disability classic. Link contact Learning Ally when you Ally book. You open the Learning Ally blank. Heading level 2 other Daisy books. Blank. If you have opened a different book, you can go back to the table of contents document by pressing enter on it in the file menu. You may also use Ctrl+J. ठीक है, You may find additional books on the link additional JAWS training downloads web page. Blank. The training download. The read is getting started with FSReader document. The read is getting started. Enter. अच्छा, अगर आप इसको सिंपल आप पढ़ना चाहते हैं, Getting started with FSReader. गेटिंग स्टार्टेड विद FSReader, ठीक है, इसको मैं प्ले कर देता हूँ. Getting started with FSReader. Freedom Scientific's FSReader Daisy Player software opens a world of accessible reading material for people who are blind or visually impaired. DAISY is an acronym for Digital Accessible Information System. FSReader delivers a host of powerful DAISY format. Only navigate forward in much finer, smaller Control-Shift-Serial. such as the tree view of major headings, as well as by words, sentences, paragraphs, and more. Control-Shift-I. When text is available, you can even perform searches and insert bookmarks. With FSReader and the DAISY format, navigation is much quicker and more efficient. Books with both full text FSReader on an HTML format and the same as HTML you format, find on the same as what you find on many web pages. ठीक है, तो साथियों आपने देखा कि FSReader की जो ऑडियो है वो आपको रीड आउट सुनने को मिल गई होगी. ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे. Alt F4, desktop, folder view enter, FSReader dash untitled. ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्या कहता है, ये कहता है साथियों कि आप यहाँ पर जो रिसेंट में ना वो 5 बुक्स अपनी रख सकते हैं. पर अभी मेरे पास फ्री ही टेबल ऑफ कंटेंट है डाउनलोड, मतलब मैंने टेबल ऑफ कंटेंट डाउनलोड किया था नेट से. ठीक है, उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है. आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए. नेट कनेक्शन है तो आप बस एंटर हिट कर दिए, जो आपका डाउनलोडिंग है वो डाउनलोडिंग हो जाएगी. और प्ले पॉज वाला तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, बाकी अब हम कुछ और Alt F, menu, file menu, open, add use 1 FSReader getting started, 1, 2 introduction, 2. इंट्रोडक्शन 3 using the keyboard to read and edit text, 3, exit, X, 3 using enter, leaving menus, using the keyboard to read and edit text. ठीक है, अब Blank. इसको प्ले कर लेते हैं. Using the keyboard to read and edit text. It's time to learn how to use the keyboard to read and edit text. This is a skill set that will stay with you as long as you're using the computer, and it's something that will be useful to you in many different situations. It's also a skill that takes a little bit of time to learn. It may not come very quickly to some of you, and that's perfectly fine. So if you find yourself frustrated or challenged as you start to go through some of these exercises, don't worry. Just keep up the practice, and it'll get easier and easier as you start to learn some of these different keyboard commands. You will begin by opening the WordPad program. This application will allow you to put some text on the screen and learn how to use different keyboard commands to make JAWS read that text. Press the Windows key to open the Start menu, and then type the word WordPad. JAWS indicates the search results as you type, and you should hear the word WordPad spoken. I'll press the Windows key on my computer, and then I'll start typing in the word WordPad. Search box edit. Word app, press right. Word app, WordPad app, press right to switch preview. I heard JAWS say WordPad app, so I know the Windows search result has located WordPad. Press Enter to open it. Document-WordPad, edit. Press Insert T, Tango, to read the title of the window. Title is Document-WordPad. The WordPad program is now open.
JAWS speaks the words Untitled WordPad. This is a blank document, much like a blank sheet of paper. You can type text in the blank area. WordPad is a very basic text editing program included with Windows. It allows you to do a little bit of text formatting, and it's very simple to use. For now, let's get some text into this document so you can practice reading commands first. You will use a JAWS command that will generate a help message and place it in the virtual viewer, which is a screen where JAWS displays text you can read. You'll copy that text and paste it into the blank WordPad document. Don't worry about memorizing these steps or if some of these keyboard commands seem unfamiliar. You'll learn them in a different lesson. But for now, you'll use them to place text in the blank document so you can begin working with reading commands. I'll press a JAWS command in. साथियों, आप FS रीडर की ये ऑडियो सुन रहे हैं। आप मुझे बताना कि आपको ये अध्याय कैसा लगा। आप घबराइए नहीं, आपको पूरा सुनाएंगे। Insert W as in William. The virtual viewer opens and text is displayed. Following are useful Windows keyboard commands: to access an application menu bar, press Alt. To open the Start menu, press Ctrl+4. I pressed Control to silence JAWS, so it stopped reading the contents of this window. This is a JAWS help message containing several different keyboard commands you could press. Let's select or highlight all this text by pressing Ctrl+A as in Alpha. Selected. Following are useful Windows keyboard commands: to access an application menu bar, press Alt. I pressed Control to silence JAWS. Now that you pressed Control+A and the text is highlighted, you need to press Control+C as in Charlie to copy the selected text to the clipboard. Copy selection to clipboard. JAWS speaks copied selection to clipboard, so you know this text has been copied. Press Escape to close the virtual viewer window. When? I'll press Insert T Tango to make sure that focus is back in the WordPad window. Title is document-WordPad. Now, you need to paste the text from the clipboard, which you can do by pressing Ctrl+V as in Victor. Paste it from clipboard. Now, the text from the virtual viewer window in JAWS has been copied and pasted into WordPad, giving you several lines of text you can use to practice with. Just to recap, press Insert W Whiskey to open the virtual viewer, Ctrl+A Alpha to highlight all the text, Ctrl+C Charlie to copy it, Escape to close the virtual viewer, and Ctrl+V Victor to paste the text. Now that you have some text in WordPad, it's time to review it. First, press Ctrl+Home to make sure the cursor is at the top of the WordPad window. Top of file. Following are useful Windows keyboard commands: JAWS speaks top of file and then reads the top line of text. You can read through all the text in the document by pressing the up and down arrow keys to navigate up and down through the text. JAWS reads each line one at a time. For example, if you press down arrow, the cursor moves to the next line and JAWS automatically. तो साथियों, ये जो कंटेंट है वो डिस्प्ले भी हो रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करके आपको इसकी बुक तैयार करके दे दूंगा, टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो आप इजीली उसको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट अब आप सोचेंगे कि मुझे मिलेगी कहाँ से, तो भाई मिलेगी तो आपको टेलीग्राम चैनल से। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको बुक मिल जाएगी। It reads it from left to right. To access an application menu bar, press Alt. JAWS read that line, stopping at the end. If you press down arrow again, the cursor will move down to the third line on the WordPad window, and JAWS will read that line as well. To open the Start menu, press Ctrl+Escape or the Windows key. You can continue to do this all the way to the bottom of the document. When focus gets to the bottom, you'll hear JAWS speak. Press Escape to close this message. If you press the down arrow key again, JAWS will repeat this message because there are no more lines of text to read. Bottom of file. Press Escape to close this message. Press Escape to close this message. If you want to navigate back up through the message, press the up arrow key. JAWS will read the page. Top of file. Following are useful Windows keyboard commands: reading by keys move line by line, and the left and right view move by characters. JAWS speaks each word as the cursor moves to it. Press the insert and right arrow applies. If you navigate backwards with the insert and left arrow, the cursor will move to the left one useful at the beginning of the word.
The number 5 is in the center of that number pad and typically contains a raised dot in the center of the key or tactile horizontal marking at the bottom. If you're using a laptop keyboard, press caps lock and the letter K as in kilo. Useful. Useful. JAWS read the current word, which was useful, and the cursor did not move. It just read the current word. Now that you're on this word, you can give a JAWS command to spell it. Hold down the insert and press number 5 on the numpad twice quickly. U-S-E-F-U-L. JAWS spells the current word. If you're using desktop layout, hold down insert and press the numpad 5 twice quickly. If you're using laptop layout, press caps lock K kilo twice quickly and JAWS will spell the current word. That's a great way to find out this. तो साथियों, यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूँ, इस बुक में हम जो रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैंने एक बुक काफ़ी लंबी सुना दी है, ठीक है, पर हाँ एक चीज़ बताता चलूँ, ये लेआउट डेस्कटॉप और लैपटॉप लेआउट दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप पेन मत क्लोज वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चलिए मैं इस ऑडियो को पॉज कर देता हूँ, मैंने पॉज कर दिया है। अब बात करेंगे व्यू मेन्यू की, इसको क्लोज करते हैं। व्यू मेन्यू में जाने के लिए Alt V प्रेस menu, view menu, navigation pane checked, the spotlight checked, spotlight settings, E, navigation pane checked, N, नेविगेशन पेन, spotlight checked, S, स्पॉटलाइट चेक, नोट चेक, ठीक है, ये है spotlight settings, E, स्पॉटलाइट सेटिंग ... ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन एक्सप्लेन किए हैं और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि जो ये सेटिंग है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ठीक है। FS रीडर की जो ये सेटिंग है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। escape, menu bar, view, the escape, leaving menu bar, control 1, Alt F, menu, file menu, control 1, exclaim, open JAWS, F1, 2 F3 introduction, exit, X3, 2 F1 using the keyboard to read and edit text, 1. Add UAK ... view. Enter menu bar. Leaving menu bar. Open dialog. File name : edit combo, etc. Blank. Files of type : combo box. User authorization key files. 1 of 1 chain. File name : edit combo, etc. Value used. Name split button. Alt F4. Blank. तो अब आज का जो ये चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको मिलेंगे फिर किसी नए अध्याय में नई जानकारी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।